Okay, we have already discussed these types of estimates, which includes the rough estimate and detailed estimate, and then how we can quickly estimate the cost of a building based on a rule of thumbs, etc. Then we have discussed a table which is called bill of quantities, in which we organize all of the data in, while we are doing estimation. Then after that, the abstract of cost. Okay. So today we will be discussing some uh, important points regarding the units of measurements. So the volumetric items, like for example uh, excavation or concrete work, which are bulky and occupies more volume, they are normally estimated in the units of volume, uh, like cubic feet, cubic meters, etc. So these are the basic techniques or basic points, with the help of which you can identify which item to be measured in which units. So the volumetric or bulky items are normally estimated in the volumetric units, and when the item is having more surface area as compared to its volume, then such type of items are normally measured in terms of areas. For example, if you talk about the plaster work, it has normally more surface area, so it is measured in the units of area. Uh, Finishing work of floor or tiling or placement of marble, etc. on the floor, it is also measured in the units of area, for example square feet or square meters. Similarly, paint work is also measured in the units of area units, and DPC is also measured in the units of area, but you have to specify the third dimension as well, thickness of the third dimension. And then if the item which you are estimating is having more length as compared to other two dimensions, then normally such type of items are measured in the units of length. For example, if we talk about the pipes, so normally they are measured in the units of length, meter or feet, etc. Wires, electrical wires, or you can talk about the wires, pipes, and the conduits in which the wiring is enclosed. They are also measured in the units of length. And there are some items or some products which are measured in the units of in just numbers. For example, number of tube lights, number of bulbs, number of fans, number of wash basins, number of showers. So such type of items are measured in the numbers. One important point which I should discuss here, when you're measuring some quantity in the units of volume, then there is no need to specify the any other dimension, because there are actually three dimensions, and your the volume is already incorporating the all three dimensions of the item. For example, if you are calculating the volume of earthwork, so you'll have to multiply length into width into height,
So you are already incorporating the 3 dimensions of the that item. But when you are decreasing the number of dimensions, for example, you are measuring an item in units of area, then you are measuring just only 2 dimensions. For example, if you are talking about the plaster work, so the plaster is normally measured in the units of area, and area is length into height. Or if I'm talking about the wall, so length into height is giving you the area. But what if the one of the wall or one of the specification is asking you to do plaster of 0.25 inches thickness, and the other specifications are saying that you must do the plaster work on the same area, but the thickness of the plaster should be 0.5 inches. Definitely, the more the thickness of the plaster, more material will be used. So in that case, you must specify the thickness of the plaster when you are specifying the area of the plaster to be covered, so that the other person should get the right or correct, the clear picture how much material will be consumed in this item. Is it clear? Clear है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके अब आप लोग बताएं, अगर हम एक और डायमेंशन यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर लेंथ पे आ जाते हैं, पाइप, अगर मैं पाइप्स की बात करूं, तो पाइप के लिए आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा ताकि उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली मुझे मिल जाए? उसको हम नॉर्मली लेंथ की यूनिट्स में मेजर करते हैं ना, तो अब पाइप के साथ So में क्या, length and diameter. सॉरी, So length and diameter, sir. लेंथ एंड डाया, गुड. तो अगर मैं सिर्फ लेंथ बताता हूँ कि इतनी लेंथ का पाइप चाहिए, तो this information is incomplete because I don't know what is the dia of the pipe. Because अगर डाया ज्यादा है तो पर फीट कॉस्ट ज्यादा होगा, और अगर डाया कम है तो पर फीट कॉस्ट कम होगा. So you must specify if you're measuring an item in one dimension, then you have to specify or give at least information so that the reader can get the idea of other 2 dimensions. So when you are mentioning the dia of the pipe while specifying the length of the pipe, so with the help of dia he can calculate the other 2 dimensions, its length, and as the pipe is circular, so the length and width, there is no concept of length and width. But if it is rectangular or any such type of thing, like conduits, plastic conduits जो वायरिंग के लिए नॉर्मली यूज होते हैं, अगर उनकी मैं बात करूं तो आपको साइज बताना पड़ेगा कि इतनी लेंथ होनी चाहिए और उसका साइज इतना होना चाहिए. लेंथ, क्रॉस सेक्शन में उसकी लेंथ और हाइट इतनी होनी चाहिए. अब कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनकी आप ना लेंथ विड्थ मेजर कर सकते हैं, ना हाइट, या इस तरह के आप स्पेसिफिकली मेजर नहीं कर सकते कि क्या कितना काम है कितना नहीं है. तो in such cases normally the dealing is done, or the rate, the agreement on the rate is done normally on the lump sum basis. For example, the site clearance work. अब ये एक्सपीरियंस से ही अंदाजा होगा कि अगर एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, तो वहाँ पे वैसे लेट्स से अगर वहाँ पे कोई गार्बेज वगैरह पड़ा हुआ है, या और कुछ ट्रीज हैं या झाड़ियाँ या पौधे लगे हुए हैं, एंड यू हैव टू क्लियर द साइट फॉर द कंस्ट्रक्शन. अब इस चीज को आप कैसे मेजर कर सकते हैं कि आप ने कितनी क्लियरेंस की है? हो सकता है कुछ एरिया पे ज्यादा
आइटम्स हो वहाँ से रिमूव करने के लिए कुछ पे कम, तो बस वो नॉर्मली एक एक्सपीरियंस बेस पे लमसम की बेस पे डीलिंग हो जाती है कि लेट्स से मैं 50,000 और 1 लाख रुपीज पे आपके लिए इस साइड को क्लियर कर दूंगा. Now, if you talk about the excavation for foundations or trenches, etc., so these are measured by taking the dimensions and you must have to measure the length and then breadth and the depth of the foundation to be excavated. And the units of measurements are normally cubic feet or cubic yards or cubic meters. Now, when we talk about the trenches, let's say this is the ground level, and you have excavated this portion for foundation, and this is the foundation. So you have taken out this material from this portion. जो भी soil थी, ये material था, वो आपने यहाँ से निकाल लिया, excavate कर लिया और यहाँ पे आपने foundation construct कर ली. But normally जो ये बैक फिलिंग होती है, ये जो ये बाकी स्पेस रह कि आप इसको फिल करना पड़ेगा, तो नॉर्मली इसको इग्नोर ही किया जाता है. बट इफ यू वांट टू estimate how much filling is required in this portion, so you can simply estimate by taking the volume of this excavated portion and then deducting the volume of the masonry used in this portion in till this level, up to this level. So if you deduct the volume of this masonry from this total volume, you will get the volume of the filling required for this portion. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now, foundation concrete. So, giving complete and concise information is very important. So, when you are estimating the concrete work in the foundation or any type of concreting anywhere in the building, so you must specify the volume of the concreting can be measured easily by taking the length, width, and height and multiplying it multiplying them all together, and you will get the volume of that concrete. But the cost of the concrete will not be clear from just the volume of that concrete. You must specify which type of concrete or which type of, what is the ratio of the concrete which is to be done in the particular portion or the particular element of the building. You must specify how much cement should be used, how much sand, and how much will be the aggregate in this concrete. This will be the complete information regarding the concrete. ओके, आप लोगों ने ब्रिक वर्क की फाउंडेशंस तो देखी होंगी, वो जो स्टेप वाइज होती हैं, देखिए. Yes, sir. Yes, sir. का क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे जो स्टेप्स बने होते हैं. सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग, बट जो स्टेप्स बने होते हैं, तो these steps are in 3 dimensions. Just imagine these steps in 3 dimensions. So they are running in this direction or perpendicular to the screen of your mobile phones or laptop. So they are running in this
direction. So when you are calculating the volume of the brickwork in this foundation, so special care should be taken for these steps. In the coming lectures, we will see how these steps uh, can cause errors or mistakes in your calculation. Because जैसे कि ये स्टेप इस ये फाउंडेशन इस डायरेक्शन में आ रही है, अब यहाँ से ये अगर लेट से 90 डिग्री पे टर्न होती है, यहाँ से इस तरफ आ रही है, फिर यहाँ से इस तरफ जा रही है, देन ये जो टर्न वाला पोर्शन है दैट इज वेरी क्रिटिकल. यहाँ पे आपसे मटेरियल्स डुप्लीकेट हो सकते हैं, यानी कि आपने एक पोर्शन पहले भी कैलकुलेट किया होगा, उसको आप दोबारा भी कर रहे होंगे. तो केयर शुड बी टेकन फॉर दीज स्टेप्स. Normally the brickwork is measured in the units of cubic feet, and the payment is made in rupees in per 100 cubic feet. 100 cubic feet का आप रेट बताते हैं कि 100 cubic feet की brickwork हम किस रेट में करेंगे, because if you are doing this in per cubic feet तो वो वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी जो राइटिंग में डॉक्यूमेंटेशन में उसमें नंबर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा हो जाती हैं. And the properties of the brickwork should also be specified. For example, brickwork in foundation and plinth using first class bricks. Type of brick आपने specify कर दी, first class brick, and laid in 1:4 or 1:6 cement sand ratio. और cement sand की जो ratio आप use करेंगे वो भी आपने specify कर दी. Now here are some important points which should be kept in your mind. The first bullet, आप first bullet को हम read करते हैं, लेकिन इसको हम skip कर देंगे जब मैं आपको next lecture में methods of estimation के बारे में हम discuss करेंगे, तो उसमें ये आपको ही clear हो जाएगा. The measurements of walls should be taken in the same order and in the same manner as for the brickwork and foundation and plinth. जिस सीक्वेंस में आप जिस सीक्वेंस में आपने brickwork and foundation को मेजर किया होगा, अपने उसी सीक्वेंस में ऊपर के सुपर स्ट्रक्चर की brickwork भी एस्टिमेट करनी है, अदरवाइज यू कैन मेक एनी मिस्टेक. दूसरा पॉइंट यह है कि इन द फर्स्ट मेजरमेंट्स all the openings such as doors, windows, verandas shall be neglected. However, deductions shall be made for the openings in the walls at the end of the item. Initially, अगर brickwork estimate कर रहे हैं या walls में material concrete walls हैं, उन वॉल्यूम एस्टिमेट करें कितना वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज हुआ है या कितना वॉल्यूम आपका ब्रिकवर्क यूज हो रहा है. इनिशियली आप उसमें जो डोर्स एंड विंडोज हैं उनको इग्नोर कर दें, अदरवाइज इट विल कॉज कॉम्प्लिकेशंस. इनिशियली आप ये अज्यूम करेंगे कि इनमें कोई ओपनिंग नहीं है, आप टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिकवर्क कैलकुलेट कर लेंगे. आफ्टर दैट you will calculate the total volume for deduction. जो वॉल्यूम आपने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. फॉर एग्जांपल, अब एक रूम में एक डोर है और 2 विंडोज हैं. उस डोर का और विंडोज का साइज आपको पता होगा, वॉल की थिकनेस भी आपको पता होगी. सो लेंथ इनटू हाइट एंड मल्टीप्लाई बाय द थिकनेस ऑफ द वॉल फॉर वन डोर, and for window length into height of the window and thickness of the wall multiplied with thickness of the wall, and you will get the volume of deduction for the window.
सो ऐसे करके आप सारी बिल्डिंग में पूरी बिल्डिंग में जहाँ जहाँ पे ओपनिंग्स होंगी वहाँ पे आप टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे जो डिडक्ट करना है एंड यू विल deduct this total volume for deduction from the total volume of the brickwork. Is it clear? Confusion तो नहीं है कोई? Any No, confusion? sir. Okay. थर्ड बुलेट में वही बात डिस्कस की है कि आपने क्वालिटी ऑफ ब्रेक्स एंड मोटर रेशो जो है स्पेसिफाई करना है. देन आर्चेस, इट्स टॉकिंग अबाउट द आर्चेस, मैसनरी आर्च जो बनाते हैं तो उसको जो है हम नॉर्मल ब्रिक वर्क में काउंट नहीं करते बिकॉज इट इज समथिंग स्पेशल आइटम और इट इज नॉट नॉर्मल ब्रिक वर्क कंस्ट्रक्शन. तो इसको आप सेपरेट पे करेंगे इसके लिए आप, क्योंकि इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है नॉर्मल ब्रिक वर्क से. इसको आप अलग से एस्टिमेट करेंगे इसका वॉल्यूम. Then the next point, which is important, the height of superstructure is very important. अब ये आप बात माइंड में रखें कि जैसे जैसे आपकी जब वॉल की स्ट्रक्चर की हाइट ज्यादा होती रहती है तो उसका रेट भी चेंज होता है. स्टोरी वाइज भी आपका कंस्ट्रक्शन का रेट चेंज होता है और हाइट के हिसाब से भी आपका जो कंस्ट्रक्शन का रेट है वो चेंज होता है. ऐसा क्यों है? कोई बता सकते हैं? और ज्यादा एफर्ट लगती है सर लेबर की. ज्यादा एफर्ट लगती है, आपको मटेरियल ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है, लेबर ऊपर नीचे आता जाता है, आपके एफर्ट ज्यादा हो जाती है. आपको सारा जो ब्रिक्स हैं, सीमेंट सैंड मोटर है, वो सारा जो है अगर लेट्स से आप फर्स्ट स्टोरी पे काम कर रहे हैं या सेकंड स्टोरी पे काम कर रहे हैं, you have to lift up that material to that story. Similarly, if you are working on a wall on the ground floor but the wall height is more than the normal, आपकी वॉल की हाइट ज्यादा है तो लेबर को उस हाइट पे उन्होंने स्कैफोल्डिंग करनी होगी. उसके जो आप देखा होगा कि उन्होंने अपने लिए एक टेम्पररी स्ट्रक्चर सा बनाया होता है वुडन पोस्ट से वो रखे होते हैं, प्लैंक्स रखे होते हैं, उस पर खड़े होकर वो ब्रिक वर्क कर रहे होते हैं. तो वहाँ तक उनको मटेरियल पहुंचाना और उसमें फिर उनको ब्रिक्स वगैरह और सीमेंट मोटार वगैरह उनको प्रोवाइड करना, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट आ जाती है चीजें, तो उसके साथ साथ उसका वेट भी चेंज होता है. Okay, let's talk about the DPC, the dam proof course. So there are two types of dam DPCs, the horizontal DPC and the vertical DPC. So it is normally of 2.5 centimeter thick or 1 inch thick, and it is very rich cement sand mortar, and some additional materials are also mixed to make it more waterproof. अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे इसकी यूनिट्स की मेजर किस यूनिट्स में इसको मेजर किया जाता है, तो इट इज नॉर्मली मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ एरियाज, स्क्वायर फीट, स्क्वायर meters, but you have to specify the thickness of the layer.
Okay. If we talk about the roofing and RCC works, so the roof slab is calculated, the area of the roof slab is calculated by taking the inside dimension of the room plus bearing of the roof slab on the walls on all the sides. ये पॉइंट कोई एक्सप्लेन कर सकता है? यस सर, जो वॉल के थिकनेस होगा सर उसको भी इंक्लूड करेंगे सर स्लैब में। बिकॉज स्लैब जो है उसके ऊपर भी रेस्ट कर रहा है, तो वहां पे भी आपकी कंक्रीट यूज हुई है, तो आपका जो क्लियर एरिया है या क्लियर स्पैन है प्लस द बेयरिंग ऑफ द वॉल। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर ये चीजें फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी में नहीं आ जाते सर, ये वॉल के नीचे जो एरिया आएगा सर, या फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम नहीं डालते सर इसमें? वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में नहीं है, आप कंटिजेंसी की बात करें। आप कंटिजेंसी की बात करें, एस्टिमेशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कौन देता है? सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी सर इसमें नहीं डालते? नहीं नहीं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें नहीं डालते। तो जो चीज आपको नजर आ रही है आपके कॉमन सेंस में है कि फॉर एग्जांपल अगर ये क्लियर स्पैन है तो इस ये जो स्लैब है ये वॉल पे भी रेस्ट कर रहा है, तो वॉल की थिकनेस तक जो जो एंड ऑफ द स्लैब है वो वॉल की जो आउटर एंड है, आउटर फेस है, तो वहां तक गया हुआ है, तो आपने ऑटोमेटिकली वो इंक्लूड करना, आपको पता है, तो आपको जब वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वो आपने इंक्लूड करना है, ये लाजमी बात है। अदरवाइज आपको अगर आप कंसल्टेंट्स की साइड से हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्टर छोड़ेगा नहीं, उसने तो अपना पैसा खर्च करके वहां पे भी कंक्रीटिंग की है, बिकॉज अगर वहां पे कंक्रीट नहीं होगी तो स्लैब तो रेस्ट ही नहीं कर सकता, गिर जाएगा। तो उसने तो अपना इनपुट सारा दिया है, उसने तो अपनी जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया है वहां पे भी, तो उसकी आपने पेमेंट करनी है, उसको पेमेंट में शामिल करना है। Okay, when you're estimating the RCC for RCC, for example, RCC slabs or RCC beams or columns, so in such type of estimation, the concrete is measured separately than the steel. आप स्टील रिइंफोर्समेंट सेपरेट मेजर करते हैं एंड कंक्रीट को आप अलग से मेजर करते हैं। The quantity of plain concrete is estimated in cubic feet and the standard unit of payment for concreting is per 100 cubic feet। 100 cubic feet के लिए आप पे करेंगे, 100 पर 100 cubic feet के लिए। अब आपने जब कंक्रीटिंग की है उसमें आपने रिइंफोर्समेंट डाली है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो है रिइंफोर्समेंट में भी दिया। आप लेट से अगर एक बीम का क्रॉस सेक्शन है 1 फीट क्रॉस 1 फीट और उसकी लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द बीम है वो 10 फीट है, तो 1 फीट क्रॉस 1 फीट इंटू 10 फीट, ये आपका कंक्रीट का वॉल्यूम है। अब इसमें आप अगर थोड़ा सा वर्क करें, इसमें अगर आपने रिइंफोर्समेंट भी डाली है, स्टील रिइंफोर्समेंट, टाइज हो गए एंड फ्लेक्सुरल रिइंफोर्समेंट, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम वो भी ऑक्युपाई कर रहे हैं और उसकी जगह पे कंक्रीट रिप्लेस हो रहा है, कंक्रीट की जगह पे वो स्टील रिप्लेस हो रहा है। तो लेकिन आपने वो चीज़ इनकॉर्पोरेट नहीं करनी, आपने ये अज्यूम करना है कि ये स्टील इसमें नहीं है और ये सारा जो वॉल्यूम है वो कंक्रीट की है, आपने स्टील को उसमें नहीं इंक्लूड करना एस्टिमेशन के टाइम। दूसरा, आप जो स्टील है वो सेपरेट एस्टिमेट करेंगे इन द यूनिट्स ऑफ वेट like tons or kilograms, etc.
स्टील बीम्स को आप नॉर्मली बाय वेट मेजर करते हैं, और वुडन बीम जो है नॉर्मली इन द यूनिट्स ऑफ क्यूबिक फीट मेजर होती हैं, और बैटन जो है ये वुडन स्ट्रक्चर्स में यूज होते हैं, या ट्रसेस में यूज होते हैं। ये सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। So such type of items are measured in the units of numbers, and you have to indicate their size and length. Talking about the roof finishing, so it is normally measured in the units of area, and the payment for this type of work is made per 100 square feet of the roof area. अब इस काम में रूफ फिनिशिंग में ये बात आप याद रखें कि इसमें आपने वो जो वॉल बेयरिंग, ये जो स्लैब का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हुए हमने वॉल्स के ऊपर जो उसका पोर्शन आ रहा है उसको भी हमने इंक्लूड किया था। यहाँ पे वो इंक्लूड नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ जो एरिया आपको नजर आ रहा है, जाहिर सी बात है अगर रूफ है उस पे साइडों पे बाउंड्री पे पैरापेट वॉल है, तो पैरापेट वॉल जो है उस रूफ पे रेस्ट कर रही है ना। अब पैरापेट वॉल के नीचे तो आपने मार्बल्स या टाइल्स वगैरह या पॉलीथीन बैग्स नहीं लगाए, आपने तो जो एरिया नजर आ रहा है आपको उस पे लगाएंगे, तो उसमें वो जो बेरिंग वाला एरिया वो इंक्लूड नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Yes, sir. Yes, sir. Okay, now this portion is talking about the reinforcement steel or general steel work. Steel is provided separately from the RCC and weighed in tons or kilograms per quintal. Now, the quantity of steel required can be estimated by using rule of thumbs or by some detailed calculations. जब आपके पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स होंगी तो आप जो है वो डिटेल कैलकुलेशन से वो निकाल सकते हैं कि कितना स्टील लगेगा। बट इफ यू डोंट हैव एनी स्ट्रक्चरल ड्राइंग, और या आपके पास टाइम नहीं है, आप जल्दी से कुछ एक रफ आइडिया लगाना चाहते हैं कि कितना स्टील इसमें रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए कुछ रूल्स ऑफ थम्स हैं, वो आपने यूज करके आप इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं। ये बात याद रखें कि जब आप रिइंफोर्समेंट स्टील के लिए एस्टिमेशन कर रहे होंगे तो इसमें जो आप एंड्स पे, आपने आरसीडी में ये देखा होगा कि आप रिइंफोर्समेंट के एंड पे हुक्स जब प्रोवाइड करते हैं या स्टील में बेंड आ जाता है या ओवरलैपिंग आती है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि इन चीज़ों को आपने इनकॉर्पोरेट करना है, बिकॉज ये जो है रिइंफोर्समेंट की डिमांड को ज़्यादा कर देते हैं, जो क्वांटिटी ऑफ रिइंफोर्समेंट उसको ज़्यादा कर देते हैं। दैट से आपको यहाँ से यहाँ तक अगर रिइंफोर्समेंट चाहिए, और तो आपको इसके लिए आपको यहाँ से इस लेंथ का आपने पीस लेना होगा रिइंफोर्समेंट का, और आप अगर इसको यहाँ से बेंड करेंगे आप इसको यहाँ से बेंड करेंगे तब जाके आपके पास इतना पीस बनेगा। तो इतने स्पैन को कवर करने के लिए आपको इस लेंथ की रिइंफोर्समेंट बार को कट करना पड़ेगा। तो keeping this in mind, you must incorporate the number of hooks or bends or overlapping in the quantity of steel required.
यहाँ पे कुछ आपको रूल ऑफ थम्स बताए गए हैं, उनको देख लें। For ordinary beams and slabs, for residential buildings, जो नॉर्मल घर वगैरह बनते हैं, तो उसमें नॉर्मली आप ये ले सकते हैं कि 6.75 पाउंड ऑफ स्टील पर क्यूबिक फीट ऑफ आरसीसी वर्क। आप ये क्विकली इस बेस पे आप एस्टिमेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि आपको स्लैब का तो वॉल्यूम पता होगा आपको, लेंथ इनटू विड्थ इनटू थिकनेस ऑफ द स्लैब। ये जो है स्लैब का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो है और वॉल्यूम ऑफ स्लैब जो है उसमें 6.75 पाउंड पर क्यूबिक फीट ऑफ कंक्रीट आपका स्टील लगेगा। तो 6.75 पर पाउंड पर क्यूबिक फीट मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ द slab, and you'll get a rough idea about how much steel will be required in a particular slab. इसी तरह आप कॉलम्स में भी इसी बेस पे कर सकते हैं, 8 से 10 पाउंड पर क्यूबिक फीट। Now we'll talk about the floors. फ्लोरिंग वर्क होता है उसमें नॉर्मली आप इस तरह होता है कि आपकी मुख्तलिफ लेयर्स लगती है, आपकी फिलिंग होती है उसमें, उसके ऊपर फिर जो बाइंडिंग मटेरियल है उसकी एक लेयर आ जाती है, उसके बाद आपका मार्बल आ जाता है। तो मुख्तलिफ आइटम्स को मुख्तलिफ तरीकों से एस्टिमेट किया जाता है। अब जो टॉप लेयर है या फिनिशिंग कोट है उसको जो उसकी एस्टिमेशन होती है, तो उसको आप नॉर्मली स्क्वायर एरिया यूनिट्स में आप एस्टिमेट करते हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द फिलिंग, अर्थ फिलिंग, तो उसको वॉल्यूम यूनिट्स में, वॉल्यूमेट्रिक यूनिट्स में आप एस्टिमेट करते हैं। अर्थ फिलिंग और सैंड फिलिंग या लीन कंक्रीट अगर जो भी आपने डाली है वहां पर, तो आपने उसको वॉल्यूमेट्रिक यूनिट्स में एस्टिमेट करना है। एंड द स्कर्टिंग इज एस्टिमेटेड इन द रनिंग फीट। स्कर्टिंग किसे कहते हैं पता है? यस सर। क्या होता है बताते हैं आप? और ये वॉल की प्रोटेक्शन होती है सर, जो फ्लोर के साथ साथ चल रही होती है सर। कॉर्नर्स, बिल्कुल। Good. नाउ प्लास्टरिंग, तो प्लास्टरिंग की तो हमने काफी डिस्कशन कर ली है पहले ही, प्लास्टर वर्क के बारे में। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा है जो हमने ना डिस्कस किया हो, बस यहाँ पे यही डिस्कशन हुई है कि आपकी जब प्लास्टर की हाइट ज़्यादा होती है तो उसके ऊपर लेबर की एफर्ट ज़्यादा होती है, और ज़्यादा हाइट पे आपके प्लास्टर की पेमेंट या चार्जेस उसके ज़्यादा हो जाते हैं। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इन दिस स्लाइड इज, जब आप प्लास्टर कर रहे होते हैं, एस्टिमेट कर रहे होते हैं, एंड यू हैव टू डू द प्लास्टर on the inner as well as outer side of the wall, और इस वॉल में ओपनिंग भी हो, लाइक एक विंडो है। तो अगर आप एक साइड के लिए एस्टिमेट कर रहे हैं तो फिर जो है उस विंडो के लिए डिडक्शन नहीं करेंगे। उस विंडो का जो एरिया है वो डिडक्ट नहीं करेंगे व्हेन यू आर एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी फॉर प्लास्टर वर्क। But if you are doing the plaster work on both sides of the wall, तो विंडो जो है बीच में, तो वो तो दोनों साइड्स पे है ना, तो ओपनिंग दोनों साइड पे होगी। तो फिर आप क्या करेंगे कि सिर्फ एक साइड के लिए आप प्लास्टर
उस ओपनिंग का एरिया डिटेक्ट कर देंगे इन दी व्हेन एस्टिमेटिंग दी प्लास्टर वर्क। समझ आई ये बात? जी समझ आइए, क्लियर है? तो बता सकते हैं ऐसा क्यों है? किसी को आइडिया नहीं है ऐसा क्यों है? सर मोटर ज़ाया भी तो होगा। हाँ जी, प्लास्टर के दौरान जो है वो मोटार काफी ज़ाया होता है। आपने नोट किया होगा कहीं पे आप कंस्ट्रक्शन देखें प्लास्टर की, तो प्लास्टर वर्क कहीं पे देखें तो वो प्लास्टर उठा के वॉल पे फेंकते हैं, कुछ वॉल से चिपक जाता है, कुछ नीचे गिर जाता है, फिर वही उठा के दोबारा फेंकते हैं। इसी तरह करते करते प्लास्टर में वेस्टेज ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप जो है वो अगर एक साइड पे आप प्लास्टर कर रहे हैं तो एक साइड से आप डग नहीं करेंगे ओपनिंग। हाँ, अगर दोनों साइड से कर रहे हैं तो चलें एक साइड से आप ओपनिंग डिडक्ट कर लें। ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट द वुड वर्क, तो uh, अगर आप वुड क्वांटिटी ऑफ वुड की बात करें तो उसको नॉर्मली वॉल्यूमेट्रिक यूनिट्स में एस्टिमेट किया जाता है, बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द finishing work on the wood, then this is estimated in the area units. For example, आप जो पॉलिश करते हैं वुड पे, सॉरी, तो उसको आप जो है एरिया यूनिट्स में एस्टिमेशन होती है उसकी। प्लम्बिंग वर्क और सैनिटरी वर्क या सैनिटरी फिटिंग्स की बात की जाए तो पाइप्स, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए कि पाइप्स वगैरह and such type of things are measured in the running feet RFT. RFT means running feet. और जो कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको आप नंबर्स में मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल वॉश बेसिन हो गए, शॉवर्स हो गए, जो बाकी और आइटम्स हो गए, नलके वगैरह, उनको आप नंबर्स में मेजर करते हैं। सिमिलर केस है इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का, तो उसमें भी आप वायरिंग को जो है वो रनिंग फीट में एस्टिमेट करते हैं। देन जो बाकी आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल बल्ब्स या बटन वगैरह, स्विचेस वगैरह, उनको आप फिर नंबर्स में एस्टिमेट करते हैं। यहाँ पे एक मैंने डिटेल लिस्ट ऐड की है आपके लेक्चर में, तो वो आप लोग खुद ही देख लें। उसमें सारी आइटम्स के बहुत डिटेल से बहुत सारे आइटम्स के आपको यूनिट्स बताए गए हैं कि कौन सा आइटम कौन से यूनिट्स में एस्टिमेट करता है। बिफोर गोइंग टू दैट लिस्ट, ये लास्ट पॉइंट देख लें कि आप नॉर्मली इलेक्ट्रिफिकेशन और सैनिटरी वर्क के लिए एस्टिमेशन अगर नहीं करना चाहते, उसके लिए आप 8% कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, आप उसकी 8% उसमें वाटर सप्लाई की अरेंजमेंट के लिए ऐड कर दें, और 8% जो है इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के लिए आप ऐड कर सकते हैं फॉर टू गेट अ क्विक एस्टिमेट। So these are the different units of different items: earthwork, rock excavation, earth filling in the plinth,
सैंड फिलिंग, देन कंक्रीट, पीपीसी, ब्रिक वर्क, इन सब की यूनिट्स आपको बताए गए हैं कि कौन कौन से यूनिट्स में आपने एस्टिमेट करना है। स्टोन वर्क, वुड वर्क, स्टील वर्क, रूफिंग एक्सेट्रा, काफ़ी डिटेल लिस्ट है। ये आपको बीएन दत्ता जो बुक है उसमें से भी आपको इजीली मिल जाएगी। काफ़ी मटेरियल्स या पेंटिंग, फर्नीचर्स, कैनिंग चेयर्स एक्सेट्रा सारी चीज़ें आ जाती हैं। Now let's discuss some important things और I'll recommend कि ये चीज़ें आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए to as being a civil engineer. Do you know कि जब आप का मटेरियल ड्राई होता है, फॉर एग्जांपल सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, अगर आप ड्राई में आप ड्राई कंडीशन में लेते हैं और वेट कंडीशन में लेते हैं तो उनका वॉल्यूम सेम होता है, डिफरेंट होता है? कौन से केस में ज्यादा होगा? अगर डिफरेंट होता है तो कौन से केस में ज्यादा होगा और कौन से केस में कम होगा, वेट कंडीशन में या ड्राई कंडीशन में? जी प्लीज। सर क्वेश्चन रिपीट करें सर, वेट में सर ज्यादा होगा सर। वेट में वॉल्यूम ज्यादा होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लेट्स से वॉल का वॉल्यूम ले लें। आपने एक कंक्रीट, लेट्स चलिए वॉल को छोड़ें, कॉलम ले लें। कॉलम, आपने कंक्रीट का कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए आप क्वांटिटीज एस्टिमेट कर रहे हैं। तो कॉलम का साइज क्रॉस सेक्शन है 1 फीट क्रॉस 1 फीट और उसकी हाइट है वो 10 फीट। तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा कंक्रीट का? 1 फीट क्रॉस 1 फीट इंटू 10 फीट। तो ये आगे आपके पास आ गया 10 क्यूबिक फीट। 10 क्यूबिक फीट। अब यही वॉल्यूम आप यूज करके आप सीमेंट सैंड एग्रीगेट कैलकुलेट करेंगे या इसमें कोई चेंजेस करेंगे? बिकॉज अगर आप यही यूज करते हैं और इतना ही वॉल्यूम लेते हैं ड्राई कंडीशन में तो फिर आप उसमें पानी डालेंगे तो हो सकता है वो ज्यादा हो जाए वॉल्यूम उसका, या हो सकता है कम हो जाए। अब आप मुझे ये बताएं कि जब आप उसमें पानी ऐड कर लेंगे, सीमेंट सैंड आपकी जो रेशो कितनी भी वो बना के उसमें पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, तो उसके मटेरियल का वॉल्यूम कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। कम क्यों होगा? अगर कम होगा तो आप रीजन बताएं साथ, और अगर ज्यादा होगा तो रीजन बताएं। सर क्योंकि उसमें वाटर का वॉल्यूम भी आएगा सर। तो वाटर का वॉल्यूम आ गया तो उसमें तो उसका टोटल वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। यस सर। अच्छा ठीक है। तो जो मटेरियल है सर, जो कैलकुलेटेड मटेरियल सर, तो इसका मतलब ये है कि आपको मटेरियल कम लेना चाहिए। अगर आपके पास 10 क्यूबिक फीट कंक्रीट लगेगी कॉलम के अंदर तो आपको 9 क्यूबिक फीट या 8 क्यूबिक फीट लेना चाहिए, ताकि आप जब पानी ऐड करेंगे तो वो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। ऐसा है? यस सर। अच्छा, सब एग्री करते हैं इससे? सर वॉल्यूम तो सेम ही रहना चाहिए जो एस्टिमेट हम कर रहे हैं। सेम क्यों रहना चाहिए? अगर वो कह रहे कि पहले आप ये बता दें, आप एग्री करते हैं कि ये वॉल्यूम ज्यादा होगा कि नहीं? यस सर सर। मेरे ख्याल से तो सेम ही रहेगा। सेम रहेगा। एक्चुअली वॉल्यूम कम हो जाता है। आपका ड्राई कंडीशन में वॉल्यूम ज्यादा होता है मटेरियल का, वेट कंडीशन में कम हो जाता है। यस सर, मैं भी यही कह रहा था सर। अच्छा, तो फिर रीजन बता दें क्यों होता है ऐसे? सर वो क्योंकि वो
पानी से सर इसमें वो जो स्पेस होते हैं वो सर कम हो जाते हैं ग्रेट, इंटर गुड जी आंसर, एक्सीलेंट। जब मटेरियल आप सीमेंट लेते हैं या सैंड लेते हैं या ड्राई फॉर्म में लेते हैं तो उनके आपस में जो है वो कोई लुब्रिकेटिंग एजेंट नहीं होता, वो ओपनली इधर उधर पड़े होते हैं पार्टिकल्स उसके। जब आपको उसमें पानी डाल के मिक्स कर देते हैं तो दे गेट लुब्रिकेटेड एंड वो कंपैक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे में परफेक्टली और ऑलमोस्ट परफेक्टली फिट हो जाते हैं। तो उससे आप जो मटेरियल है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो अगर आप 10 क्यूबिक फीट कंक्रीट लग रही थी कॉलम में और आप 10 क्यूबिक फीट ड्राई मटेरियल लेते हैं और उससे आप कंक्रीट बनाते हैं एंड उसको प्लेस करते हैं, तो हो सकता है वो कॉलम थोड़ा सा खाली रह जाए, उसमें थोड़ी सी 9 क्यूबिक फीट कंक्रीट बन जाए या 9 क्यूबिक फीट फिल हो जाए या 8.5 क्यूबिक फीट फिल हो जाए, बाकी वो स्पेस बच जाए, फिर उसके लिए आपको और कंक्रीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो कंक्लूड हम ये करते हैं कि अगर आपको 10 क्यूबिक फीट कंक्रीट चाहिए तो आपको ड्राई कंडीशन में वो थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा लेना पड़ेगा ताकि आप जब उसको वेट करें तो वो एग्जैक्टली उसी पोजीशन में या उसी क्वांटिटी तक पहुंच जाए। इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, अब कितनी ज़्यादा लेंगे, अब पॉइंट ये आता है कितनी ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हुई, आपको बता रहा है कि अगर आप सीमेंट सैंड मोटर है, सीमेंट सैंड मोटर है, ठीक है, जो नॉर्मली ब्रिक वर्क में यूज होता है या प्लास्टर में यूज होता है, तो अगर आप 120 क्यूबिक फीट ड्राई मटेरियल लेते हैं तो वो आपको 100 क्यूबिक फीट वेट मटेरियल देगा। 120 क्यूबिक फीट ड्राई वॉल्यूम जो है आपको 100 क्यूबिक फीट वेट वॉल्यूम देगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि आप जो वेट कंक्रीट है, वेट कंक्रीट की क्वांटिटी आपके पास जब आ जाए उसको आप 1.2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके पास ड्राई में कन्वर्ट हो जाएगा वो वॉल्यूम 1.2। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या है, सीमेंट सैंड मोटर का कन्वर्जन फैक्टर फॉर कन्वर्टिंग इट फ्रॉम वेट वॉल्यूम टू वेट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम, दिस इज 1.2। Now, when you talk about the lime sand mortar, in this case, 113 cubic feet of dry volume will give you 100 cubic feet of wet volume. Or you can say that the factor for converting the wet volume to dry volume is 1.13. Similarly, when we talk about the cement lime sand mortar, so this is 12 cubic feet dry volume will give you the 100. So the conversion factor is 1.12. Then there is some discussion about the plaster work. So the dry mortar required for 100 square feet of half-inch thick plaster is 6 cubic feet. आधा इंच थिक प्लास्टर है और उस प्लास्टर का एरिया जो है, प्लास्टर की जो सरफेस एरिया है, जो जिस एरिया पे आपको प्लास्टर करना है वो 100 स्क्वायर फीट है। उसके लिए जो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट प्लास्टर चाहिए होगा ड्राई मोर्टार का वो 6 क्यूबिक फीट होगा। तो अगर आप हाफ इंच है और आपके पास एरिया जो है 200 स्क्वायर फुट है तो आप जो प्लास्टर के लिए मटेरियल चाहिए होगा वो 12 क्यूबिक फीट हो जाएगा। या अगर आप एरिया को कांस्टेंट रखते हैं और थिकनेस को इंक्रीज करते हैं, लेट्स से आपके पास एरिया जो 100 स्क्वायर फुट ही है और आपके पास जो थिकनेस ऑफ द प्लास्टर है वो 1 इंच है, तो आपके पास फिर जो है वो कंक्रीट जो ड्राई मोर्टार की क्वांटिटी वो इंक्रीज हो जाएगी 12 क्यूबिक फीट। इन वैल्यूज से आप
प्ले अराउंड कर सकते हैं टू कैलकुलेट दी और टू एस्टिमेट योर रिक्वायर्ड मटेरियल. Now, if we talk about the cement concrete, और यही चीज सबसे ज्यादा यूज होती है. आप नॉर्मली जब आपको सीमेंट वॉल्यूम सीमेंट बैग्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं कि कितने सीमेंट बैग्स लगेंगे या कितनी सैंड लगेगी या कितना कोर्स एग्रीगेट लगेगा. तो नॉर्मली आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इसी चीज की जरूरत पड़ती है. तो इन दैट केस 154 cubic feet of dry material will give you 100 cubic feet of wet material of cement concrete. यहाँ पे आपका फैक्टर जो है वो 1.54 आ जाता है. तो अगर आपके पास कंक्रीट है 10 cubic feet कॉलम के लिए चाहिए थी, हमारी मैंने जो पिछली एग्जांपल दी थी, कॉलम है एक 1 feet क्रॉस 1 feet क्रॉस सेक्शन है उसका और 10 feet हाइट है उसकी. तो उसका टोटल वॉल्यूम जो है 10 cubic feet हो गया. तो आप जब कंक्रीट उसमें डालेंगे तो वो वेट कंडीशन डालेंगे ना, तो आपको वेट वॉल्यूम चाहिए, बट मटेरियल आपने ड्राई लेना है. तो आप ड्राई मटेरियल कितना लेंगे? तो अगर आपके पास 10 cubic feet ऑफ वेट मटेरियल है तो आपके पास ड्राई चाहिए होगा 1.54 मल्टीप्लाई बाय 10. तो ये क्या आ जाएगा इससे 15.4. यस सर. तो 15.4 जो है आपके पास ड्राई मटेरियल चाहिए. अब 15.4 cubic feet को आप फिर कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स में, वॉल्यूम ऑफ सैंड और वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फिर आप कैलकुलेट करेंगे इससे. Now let's talk about the brickwork. So in 100 cubic feet, the number of bricks are 1350. 1350 ब्रिक्स चाहिए होती हैं इन 100 cubic feet. और 1350 ब्रिक और 100 cubic feet ऑफ ब्रिक मैसनरी कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको ड्राई मोटार जो है वो 30 cubic feet चाहिए और वेट मोटार जो आपको चाहिए वो 25 cubic feet है. सिमिलरली अगर आप जो है वो फ्लोर पे ब्रिक्स ले करें, जिस तरह आप नॉर्मली देखते होंगे गलियों में ब्रिक्स के फ्लोर बनाए जाते हैं, तो उस केस में आपके पास अगर एरिया जो है वो 100 स्क्वायर फीट है और आप यूजिंग ब्रिक्स ऑन बेड, आपकी जो प्लेसमेंट पोजीशन है ब्रिक्स की वो ब्रिक्स ऑन बेड. ब्रिक्स ऑन बेड का मतलब पता है? ब्रिक्स ऑन बेड और ब्रिक्स ऑन एज. यस सर. उसका जो ब्रिक का जो फ्रॉग होता है वो डाउन आएगा, मतलब वो जो है हॉरिजॉन्टल आएगा. ब्रिक के ऊपर जो इम्प्रेशन बना होता है जिसको हम फ्रॉग कहते हैं नॉर्मली, वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगा. तो उस पोजीशन में अगर आप ब्रिक रखें तो एक ब्रिक जो है वो ज्यादा एरिया कवर करती है. तो आप इन दैट केस आपकी नंबर ऑफ ब्रिक्स 360 यूज हो रही है और मोटार जो है 9 cubic feet यूज हो रहा है. बट इफ यू आर कवरिंग द सेम एरिया of 100 square feet but using the bricks on edge, in that case आपकी ब्रिक्स ज्यादा लगेंगी क्योंकि एक ब्रिक जो है कम एरिया कवर कर रही होगी. तो ब्रिक्स जो है 540 लगेंगी आपकी. अब ब्रिक्स ज्यादा लग रही हैं तो आप सोच सकते हैं इस पे कि आपके नंबर ऑफ जॉइंट्स, दो ब्रिक्स के बीच में जो आप सीमेंट लगाएंगे तो वो जो जॉइंट आ रहा है हर एक नंबर ऑफ जॉइंट्स भी वो इंक्रीज हो गए. तो हर जॉइंट को प्रॉपर स्ट्रेंथन करने के लिए आपको मोटार भी ज्यादा चाहिए होगा, व्हिच इज नाउ इंक्रीज टू 13 cubic feet.
यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। ओके। ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। तो वो आपने बिल्डिंग मटेरियल्स में आपने शायद डिस्कस किया हो, पढ़ा भी हो, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं ब्रिक्स की। स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक्स होती हैं, ट्रेडिशनल ब्रिक्स होती हैं, उनके साइजेस भी हो सकते हैं आपने देखे हो। द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर इज द नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक एंड द एक्चुअल साइज ऑफ द ब्रिक। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक की, तो यहाँ पे लिखा है कि एक्चुअल साइज इसका 19 सेंटीमीटर क्रॉस 19 सेंटीमीटर क्रॉस 19 सेंटीमीटर क्रॉस 9 सेंटीमीटर क्रॉस 9 सेंटीमीटर है। और इसका नॉमिनल साइज उसी ब्रिक का नॉमिनल साइज जो है 20 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर है। ये कैसे हो सकता है कि एक ब्रिक के दो साइज हैं? सर ये विदाउट मोटर के साथ है सर। सर इसमें जो जॉइंट्स होंगे ना वो भी सर जी शामिल होंगे नॉमिनल साइज में। तो नॉमिनल साइज जो है वो एक अजम्पशन होती है। आप जब वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं या ब्रिक्स ले करते हैं तो ब्रिक डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर नहीं पड़ी होती, उनके बीच में मोटार भी पड़ा होता है, ठीक है। वो भी थोड़ी बहुत स्पेस ऑक्युपाई करता है। अगर एक दो ब्रिक्स हो तो इतना फर्क नहीं पड़ता, बट पूरी वॉल है और देयर विल बी अ नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ जॉइंट्स। साइडों पे भी आपका स्पेस जो है थोड़ा बहुत वो मोटार्स ऑक्युपाई करता है, बॉटम पे भी, ऊपर भी, नीचे भी। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि एक ब्रिक का साइज जो है वो नहीं है जो उसका एक्चुअल साइज है। हम ये अज्यूम करते हैं उसका साइज जो है थोड़ा सा ज्यादा है। जब आप ये अज्यूम करके नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करते हैं तो वो एक्चुअल नंबर ऑफ ब्रिक्स होते हैं। आप नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक वर्क आपको पता है, वो आपके पास कैसे आएगा? लेंथ ऑफ द वॉल इनटू हाइट ऑफ द वॉल इनटू थिकनेस ऑफ द वॉल। ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक आ गया। अब आप अगर एक्चुअल साइज ऑफ द ब्रिक से आप वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल ब्रिक कैलकुलेट करते हैं और वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक कैलकुलेट करते हैं और नंबर ऑफ डिवाइड करते हैं और उससे नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करते हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक्स ज्यादा आएंगी, क्योंकि आप ये अज्यूम करें कि ये ब्रिक्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली और एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ पड़ी। बट दैट इज नॉट द केस। आपकी ब्रिक जो है आपके एक ब्रिक के चारों तरफ, ऊपर नीचे, लेफ्ट एंड राइट, हर तरफ आपके ब्रिक क्या वो मोटर है, तो वो भी कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। तो उस चीज को इंकॉर्पोरेट करने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि ब्रिक का साइज थोड़ा थोड़ा ज्यादा है। फिर आप जो नंबर ऑफ ब्रिक्स एस्टिमेट करते हैं तो वो नॉमिनल साइज के बेस पे वो एस्टिमेशन होती है। यहाँ पे कुछ थंब रूल्स बताए गए हैं कि आपका लेबर आउटपुट कितना होता है नॉर्मल। अगर आप assuming that the labor is working 8 hours per day, ठीक है, and the width lift जो है वो है up to 5 feet or less। आप एक्सकवेशन कर रहे हैं, अर्थवर्क कर रहे हैं और आपका लेबर जो है 8 घंटे काम कर रहा है और जो लिफ्ट है, फॉर एग्जांपल वो जो मटेरियल उठाता है, एक्सकेवेट कर रहा है तो वो नीचे काम कर रहा है और ग्राउंड लेवल ऊपर है, तो मटेरियल उठाता है और वो ऊपर फेंकता है, तो जो लिफ्ट है वो 5 फुट है या उससे कम। इन दैट केस मीडियम सॉइल में आपकी जो एक्सकेवेशन होगी वो 75 to 100 क्यूबिक फीट पर डे हो जाएगी। अगर सॉइल थोड़ी सी हार्ड है या स्टिफ है तो वो थोड़ा सा पर डे एक्सकेवेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, 50 से 75 क्यूबिक फीट। अगर रॉक्स है, रॉकी सॉइल है, इन दैट केस वो और भी डिक्रीज हो जाएगी, it will be 25 to 30 cubic feet per day।
per person. अगर आपकी ये लिफ्ट ज़्यादा होती है तो ये हर एक की वैल्यू वो और भी डिक्रीज हो जाएगी, हर एक कॉलम में जो वैल्यू है, क्योंकि more the lift, more will be the effort required to lift the soil up to that height. और ये लिफ्ट का क्या मतलब है सर? लिफ्ट मींस अगर आप एक फाउंडेशन के लिए एक्सकवेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप लेबर जो है एक्सकवेशन स्टार्ट करता है तो वो करते करते ऐसा ऐसा नीचे जा रहा है ना, ग्राउंड लेवल से नीचे जा रहा है, तो उसने तो मटेरियल उठा के एक्सकेवेटेड पोर्शन में ही तो डंप नहीं करना, उसने बाहर निकालने, ग्राउंड पे फेंकना है। अब वो लिफ्ट जो है वो मटेरियल को एक्सकेवेट करके वो बाहर जब ऊपर फेंकता है ग्राउंड लेवल पे, तो दैट हाइट इज बेसिकली कॉल्ड एज लिफ्ट। तो जितनी वो हाइट ज्यादा होगी उतना लेबर का एफर्ट ज्यादा लगेगा और उतना टाइम ज्यादा लगेगा एक्सकेवेशन में। तो हम ये अज्यूम करें कि लिफ्ट जो है 5 फुट है और वर्किंग आवर जो है 8 आवर्स पर डे। इन दैट केस ये टाइप ऑफ सॉइल्स है एंड ये पर डे कितनी एक्सकेवेशन एक बंदा कर सकता है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन लगेगी एक गिवन एरिया एक्सकेवेट करने के लिए अप टू द स्पेसिफाइड डेप्थ, ये आप एस्टिमेट कर सकते हैं यूजिंग दिस टेबल। ओके सर। Okay. Then there is some discussion about the bitumen. Bitumen जो आप DPC में यूज करते हैं, तो DPC में bitumen यूज किया जाता है to make it more waterproof. तो अगर 100 स्क्वायर फीट ऑफ DPC है तो फर्स्ट कोट में आपके 15 किलोग्राम ऑफ बिटुमेन लगेगा एंड सेकंड कोट में आपका 10 किलोग्राम लगेगा। अब आप एस्टिमेट कर लें कि आपका कितना स्क्वायर फीट एरिया है फॉर द DPC एंड यू कैन यूज दिस value as a baseline and you can estimate the quantity of bitumen required for your work. Then this is some discussion about cement bag. Cement bag की properties बताई गई कि एक बैग जो है उसका वेट जो होता है वो 50 किलोग्राम होता है और उसमें 1.25 उसका वॉल्यूम होता है 1.25 क्यूबिक फीट। तो ये वॉल्यूम आप याद रखेंगे, वेट भी याद रखेंगे ताकि आप इन द कमिंग लेक्चर्स आप नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स कैलकुलेट कर सकें। ठीक है। Then there are some specific weights, unit weights जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगे, लाइक PCC जो है 150 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट है, सॉरी RCC, PCC जो है 145 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट है और एग्रीगेट जो है 166 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट है। टिम्बर कितना यूज होगा एक दरवाजा बनाने में, तो वो उसकी एस्टिमेशन आप इन बेसलाइन वैल्यू से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डोर्स का जो एरिया है तो वो 100 स्क्वायर फीट है एंड टाइप ऑफ डोर जो है वो पैनल डोर्स है। पैनल डोर्स मींस के पूरा जो डोर है वो वुड का ही बना हुआ है, टिम्बर का ही बना हुआ है, या विंडो जो है वो पूरी वुड की ही बनी हुई है। इन दैट केस 100 स्क्वायर फीट एरिया के लिए आपको 13 क्यूबिक फीट ऑफ टिम्बर रिक्वायर्ड होगा। And if the door is glazed door or glazed window, glazed means उसमें शीशा वगैरह लगा हुआ है, बीच में उसके पैनल्स खाली हैं, वहाँ पे शीशा लगा है, तो in that case आपकी टिम्बर जो है कम यूज होगी, वुड कम यूज होगा। And for 100 square feet of glazed windows and ventilators, the required volume of the timber is 8 cubic feet.
Then there is some information about the whitewash जो चूना करते हैं. For that purpose, uh, the covered area to be covered is 100 square feet. Then for 100 square feet, 1 kilogram of lime will be required. If your area is 200 square feet, then it will be 2 kilograms. If it is 300 square feet, it will be 3 kilograms. Reducing the calculations and during the estimation. So please remind me to discuss this slide after the next class, because यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोगों का भी जो प्रोसीजर है एस्टिमेशन का वो लेक्चर नहीं हुआ तो वो आपको ये समझ नहीं आएगी. जब वो लेक्चर हो जाए आपको प्रोसीजर समझ आ जाए कि हम एस्टिमेशन कैसे करते हैं बिल्डिंग्स में, वॉल्स की क्रॉस सेक्शंस या फाउंडेशंस में. तो आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस दिस, वी विल बी इन पोजीशन टू डिस्कस दिस स्लाइड. Then now let's talk about the degree of accuracy in the estimation work. Degree of accuracy will depend upon the item of the type of the item which you are estimating. If you are doing or preparing an estimate for very expensive material, then you should be very careful and you should be estimating the values to more number of digits up to the decimal. For example, अगर आप कोई expensive marble लगा रहे हैं फ्लोर पे, तो उसके लिए जब आप एस्टिमेट बनाएंगे तो आपको 0.5 सेंटीमीटर तक आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए. आप जब उसकी लेंथ डायमेंशन मेजर करेंगे तो इतनी आपकी एटलीस्ट एक्यूरेसी होनी चाहिए 0.5 सेंटीमीटर तक. बट इफ यू आर डूइंग और इफ यू आर एस्टिमेटिंग द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क, सॉफ्ट सॉइल है, इतना कुछ नहीं है, तो आप खैर अगर 1-2 इंच आगे पीछे भी हो जाए तो मसला नहीं. इज इट क्लियर? तो आप अपने आइटम को देखते हुए आप डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आप डिसाइड कर लेंगे. आप अगर सस्ता आइटम है तो आप खैर अगर पॉइंट्स के बाद जो वैल्यूज हैं इनको इग्नोर भी करते हैं, राउंड फिगर्स में लेते हैं, तब भी ठीक है. बट इफ द आइटम इज एक्सपेंसिव देन यू मस्ट टेक द वैल्यूज आफ्टर द डेसिमल. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now, how you can calculate the area for deduction when you are doing or preparing the estimate of the brickwork and the walls. So, if the opening is rectangular, so simply multiply the length into height, and you will get the area, and multiply it with the thickness of the wall, and you will get the volume of the material to be deducted. If it is having a small arch over it, so again you can simply take length into height and thickness of the wall, and you can ignore this small arch because to be on conservative side.
क्योंकि आप थोड़ा एरिया चेक करेंगे तो आपके पास क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी, तो वो इतना मैटर नहीं, थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी। अगर कीपिंग इन माइंड कि वो आर्च जो है स्मॉल है, स्मॉल सेगमेंटल आर्च है। सेगमेंटल आर्च पता है कौन सी होती है? यू नो व्हाट इज सेगमेंटल आर्च? If this is a circle, actually it is not a circle, but assume it is a circle, and if I am taking a segment of a circle over here, so this arch is called as a segmental arch. It is a segment of a circle, and if I am cutting this at the mid of the circle, so this arch will be called as semicircular arch. अगर सेगमेंटल आर्च है लेकिन वो सिग्निफिकेंटली हाइट है उसकी, देन यू कैन, उसकी हाइट ज्यादा है, अगर आर्च की हाइट ज्यादा है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ सेगमेंटल पोर्शन। तो आप कैसे करेंगे? ये आप रेक्टेंगुलर पोर्शन एज्यूम कर लेंगे और ये सेगमेंटल आर्च, एंड सेगमेंटल आर्च का एरिया आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ द वॉल एंड यू विल गेट द वॉल्यूम टू बी डिटेक्टेड। सेमी सर्कुलर आर्च ओपनिंग सिंपल है, आप लेंथ इनटू हाइट फॉर द रेक्टेंगुलर पोर्शन एंड दिस इज द डाया ऑफ द सर्कल। तो डाया की बेस पे आप सेमी सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, which will be equal to area of the circle divided by 2 and multiply it with the thickness of the wall and we'll get the volume of that portion. अगर मेसनरी आर्च मेसनरी है, ठीक है, एंड तो इसकी एस्टिमेशन आप कैसे करेंगे कि लुक एट दिस आर्च। अगर आप नोट करें तो इसका आउटर एज जो है वो उसकी लेंथ ज्यादा होगी, इनर एज की, बॉटम एज की लेंथ कम होगी। तो आप क्या करें कि लेंथ ऑफ द आर्च ये मिड पे ले लें, ठीक है। दिस विल बी एन एवरेज लेंथ और मीन लेंथ। इस लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें थिकनेस ऑफ द आर्च और वॉल्यूम ऑफ द आर्च आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक वर्क इन द आर्च आ जाएगा। एंड if there is a lintel beam तो वो तो स्ट्रेट होती है, इट इज वेरी सिंपल, उसका आपको लेंथ इनटू थिकनेस इनटू द थिकनेस ऑफ द वॉल, इससे आपके पास सिंपल वॉल्यूम आ जाएगा लिंटल बीम का। And by this we can conclude our today's lecture. आपका कोई क्वेश्चन हो तो you can ask.